Hello children, once again welcome to my online class, and today will be the third and final video on this chapter, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand for class 9th CBSE. My dear children, in the previous video, that is the second part, we saw that a young boy along with his parents who was going to a village fair, when he finally reached there, he became very excited by seeing all new things around him. In the fair, the child was attracted by the cries of a sweet seller. His mouth watered for the burfi, which was a favorite sweet to him. He knew very well that his desire would not be fulfilled, yet he spoke of in a whisper and then moved on, assuming that his parents would not provide him that sweet. Then he came across flower seller who was selling flowers of different kinds. He got attracted towards Gulmohar, but again knowing the fact that his parents would not entertain him, he moved ahead. Things were happening with him in this way, and at last, when he saw that huge roundabout, that swing, he got that pleasure of a ride. And with a strong determination, he asked his parents for a ride, but he did not get any answer. He turned around to see his parents, but his parents were nowhere. He was all alone standing there looking for his parents. That was what we discussed in the previous video. And now let's find out what happens with the child in this story. So children, let's start the explanation of the rest of the chapter. So this would be the third and final video on this chapter, The Lost Child. In the previous video, we saw that the little child who along with his parents went to a village fair, and there at the end of the video we saw that the child is lost. He's somewhere not with his parents, and he's looking here and there, but his parents are nowhere. And now we'll continue the story. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Now what happened? This little child, he was looking after his parents, he was looking here and there, and he was literally very much concerned about his parents. So he saw a group of people standing a bit far from him. So he started looking very carefully among those people whether his parents are there or not. But he realized that his parents were nowhere. And he found that those people, they were laughing and they were just, enjoying themselves. Then what happened? This child, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. So finally what happened when he realized that my father and my mother were not there in this group of people, then he quickly ran towards a shrine. Okay, shrine means a temple. And where he saw so many people were there. तो जब उसने देखा कि उसके माँ बाप उस भीड़ में नहीं हैं,
तो उसकी नज़र गई दूर में एक मंदिर थी, और मंदिर पर जब उसकी नज़र गई तो उसने देखा कि उस मंदिर के पास काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उसको लगा शायद उस भीड़ में हो सकता है कि मेरे माँ बाप भी वहाँ पर मौजूद हों। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. Then what happened finally, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, पूरी तरीके से लोग वहाँ पर भरे हुए थे, लेकिन उन्हीं लोगों के पैरों के बीच में से सिसकते हुए, रोते हुए, मम्मी पापा कहते हुए वो बच्चा जो है आगे बढ़ रहा था। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. Then literally what happened finally, when he was quite close to that temple, then he realized that the crowd became very thick. जब वो उस मंदिर के द्वार तक पहुंचा वो बच्चा, तो उसने देखा कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड पीपल वर जॉसलिंग वन अनदर। ओके, जॉसलिंग का मतलब होता है एक दूसरे को धकेलना, कंधे से एक दूसरे को धक्का मुक्की करना उस भीड़ में। सो यू नो पीपल वर जॉसलिंग वन अनदर एंड हैवी मैन, और सब भारी भरकम बड़े लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, और उनकी आंखें भी बड़ी लाल और ऐसी लग रही थी जैसे उनकी आंखों में जो है एक खून सवार है। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधे उन लोगों के थे, और उस भीड़ में कहीं ना कहीं ये बच्चा भी जो है फंसा हुआ था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." Then what happens finally? The poor child struggled to thrust का मतलब होता है निकलना, एक रास्ता पाना, to get away between their feet. अब वो उन भारी भरकम लोगों के पैरों के बीच में से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, नॉक्ड मतलब, लेकिन बार बार उसको लात पड़ रही थी, बार बार उसको जो है लोग दबा दे रहे थे। टू एंड फ्रो मीन्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ से उसको काफ़ी चोट लग रही थी। ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ठीक है ना। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है वो कुचल जाता उन लोगों की पैरों के नीचे, अगर वो चीखता नहीं, अगर वो जोर से चिल्लाता नहीं, मम्मी पापा, ओके, अगर वो चिल्लाता नहीं तो शायद उस भीड़ में उस भारी भरकम लोगों के पैरों के नीचे वो दब जाता। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है टू स्टेप हैवीली, किसी चीज़ के ऊपर भारी भरकम पैर रखना, कुचल देना, दबा देना पैरों से। ओके, A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अब उसी भीड़ में जो है एक व्यक्ति ने इस बच्चे की आवाज़ सुनी। स्टूपिंग का मतलब होता है टू बेंड, झुकना। सो वो झुक कर बड़ी मुश्किल से उसने झुका और इस बच्चे को जो है ऊपर उठाया अपनी गोद में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। नाउ दैट मैन इज आस्किंग, यू नो, कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। हाउ डिड यू गेट हियर एंड हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। The child wept more bitterly than ever now. अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर उस भीड़ में से जो है अपने आप के लिए रास्ता बनाते हुए जो है वो बाहर निकलने लगा। And the child wept more bitterly than ever now. और बच्चा जो है और ज़्यादा रोने लगा। Steered, S-T-E-E-R-E-D. Steered means to take someone in the direction in which you want him. मतलब किसी व्यक्ति को उस दिशा की ओर ले जाना जिस दिशा की ओर आप जाना चाहते हैं। That means steered. So finally what happens? अब एक सज्जन व्यक्ति मिले हैं जो इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर पूछ रहे हैं कि तुम कैसे यहाँ पर आए, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। And only cried, I want my father, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat
tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. Now see what is happening. This gentleman, this gentleman is really very concerned about this child. So just to console him, just to divert his mind, he took that child to that roundabout and he offered him, okay, a ride, and he asked him, okay, would you like to ride on the horse? But see, that child was repeatedly he was saying, I want my mother, I want my father. He was not at all interested in taking a ride, whereas a few minutes back he was literally got attracted towards that swing, and he had a bold request. He went for a bold request, asking his parents that I want that, ride. सो लिटरली व्हाट इज हैपनिंग हेयर, देखिए मैं फिर आपको बताता हूँ. ये बच्चा थोड़ी देर पहले जब उस राउंड अबाउट झूले के पास था, उस झूले को देखकर वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया कि वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मुझे इस झूले में झूलना है, मुझे झूले में झूलना है, मुझे इस झूला में झुलाओ. बट अनफॉर्चुनेटली जब वो देखता अगल बगल तो उसके माँ बाप नहीं रहते. अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, अब उन्होंने इस बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए कह सकते हैं, या ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को लेकर उसी झूले के पास, उसी राउंड अबाउट के पास गए और कहे कि क्या बेटा तुम इस झूला को झूलना चाहते हो. तो अब देखिए बच्चे की मानसिकता को देखिए. थोड़ी देर पहले उस झूले के लिए वो बच्चा जो बहुत ही तत्पर था, वो उस झूले में झूलना चाहता था, लेकिन अब उस झूले पर झूलने के लिए वो मना कर दे रहा है, क्योंकि अब उसकी प्राथमिकता क्या है. नाउ हिज प्रायोरिटी इज हिज फादर एंड हिज मदर. नाउ ही वॉन्ट्स हिज फादर, हिज मदर टू बी विथ हिम. Now he is literally looking for his parents. Now that roundabout is nothing for him. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. Now again see what is happening. This gentleman, he took him to that snake charmer and he was literally trying to divert his mind, but that child who a few minutes ago was literally listening to that music and enjoying that music, this time he's not at all ready to listen to that music. Even he shut his ears even with his fingers, and with a double pitched strain he started shouting that I want my mother, I want my फादर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही बच्चा थोड़ी देर पहले उस सपेरे के पास खड़े होकर उस सांप को देख रहा था और उसकी बिन की धुन को सुन रहा था, लेकिन अब जब इस व्यक्ति ने, इस सज्जन व्यक्ति ने इस बच्चे को वहाँ पर ले गए, तो वो बच्चे का मन अब उस बीन को सुनना, उस सांप को देखने में नहीं रहा, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान कहाँ है, अपने माँ बाप की तरफ है. अबाउट हिज literally he is looking for his parents. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. See again once what is happening here. This child कुछ देर पहले गुब्बारे की मांग कर रहा था. अब जब गुब्बारे के पास इस बच्चे को ले जाया गया और कहा गया कि बताओ बेटा तुम्हें कौन से गुब्बारे चाहिए, now this child is saying that I don't want balloons, I only want my mother, my father. Okay, so see, would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. Persuasively का मतलब होता है कन्विंस करते हुए, बिल्कुल मनाते हुए किसी को, बताओ बेटा चाहिए तुम्हें, चाहिए मैं दिलाऊं गुब्बारे. ओके, बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम दैट बलून्स. अब उसकी नज़रों में वो बलून्स की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि उसकी अहमियत इस समय क्या है, हिज पेरेंट्स. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Bore means to carry, गोदी में उठा के ले जाना. अब वो व्यक्ति जो है इस बच्चे का मन बहलाने के लिए कहाँ पे ले गया, जहाँ पे फूल बेचने वाला बैठा हुआ है. एंड आस्किंग हिम, तुम्हें फूल चाहिए क्या, तुम्हें माला चाहिए तुम्हारे गले के चारों तरफ, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. ओके, नाउ ही इज ऑफरिंग हिम दैट गार्लैंड.
But see what is the answer of this child. The child turns his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. लेकिन अब देखिए यहाँ पर उस बच्चे का जो ध्यान है वो बिल्कुल भी जो है उस फूलों की तरफ नहीं है, बल्कि उसने अपना मुंह मोड़ लिया और रिपीटेडली reiterated means to say something again and again. ठीक है, so again and again repeatedly he is saying that I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Now what happened, that gentleman, he decided to amuse this little boy in a different way, because he was extremely sad. Disconsolate means very sad, बहुत ही ज़्यादा दुखी. अब उस दुखी मन को थोड़ा सा खुश करने के लिए he decided to take him to that sweet shop, okay, and he took there and he asked him, okay, would you like some sweets, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. So literally what happens, उस मिठाइयों को देखकर, especially he was very fond of barfi, in the initial lines we read that he was very fond of barfi, but this time he neglected that barfi also, and repeatedly he was crying and saying, I want my mother, I want my father. So that was the story, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. So my dear children, जो बेसिक थीम है इस स्टोरी का वो ये है कि एक बच्चा जब अपनी माँ बाप के साथ है तो बहुत बेफिक्र है. उसे पता है कि मेरा ध्यान रखने वाले कौन हैं, मेरे माँ बाप हैं. मेरा ख्याल रखने वाले क्या हैं, मेरे माँ बाप हैं. और वो मेरे पास हैं तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है. और उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है. ही इज़ लिटरली लुकिंग आफ्टर मैनी थिंग्स. ही गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द toys and sweets and so many other things. But ultimately what happens when he realizes that he is lost, when he realizes that his parents are not around him, then actually he realizes that he is all alone. A sense of fear encompasses him. और जब वो महसूस करता है कि वो एकदम अकेला है, उसके माँ बाप नहीं है आसपास, तब उसे एहसास होता है कि अरे मैं तो एकदम अकेला हूँ, मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है. एक अजीब सा डर उसे समा जाता है. और अब क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो उसे पसंद थी, जिसकी वो मांग कर रहा था, अब वो सारी चीज़ें जब उसके सामने रखी गई तो उसने सारी चीज़ों को मना कर दिया लेने से. यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रायोरिटीज़, प्राथमिकता. एक बच्चे के लिए उसकी प्राथमिकता क्या है, उसके माँ बाप हैं, खिलौने नहीं हैं. खिलौने, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी. बट व्हाट इज़ द प्राइमरी थिंग? द प्राइमरी थिंग इज़ हिज पेरेंट्स. अगर माँ बाप हैं तो सब अच्छा लगता है, खिलौने भी अच्छे लगेंगे, गार्लैंड भी अच्छा लगेगा, स्वीट्स भी अच्छे लगेंगे. बट इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट देयर, then there is no pleasure in all these worldly things. And the biggest treasure in this world is your parents. और उनसे बड़ा अमूल्य, बहुमूल्य चीज़ और कुछ नहीं हो सकता. और वही बात the writer Mulk Raj Anand has tried to showcase in this beautiful story, The Lost Child. I hope the story is quite clear to all of you. So that was all from this video. Thank you and take care. Well, my dear children, I hope the chapter is very clear to all of you. Still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section. That was all from this video. Thank you and God bless you.